बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स यूनिट 9, इसका नाम है फ़िज़िकल ऑप्टिक्स, इसमें लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा ये है लेक्चर नंबर 17 और टॉपिक का नाम है कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अब बच्चे इस चैप्टर के जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं केपी की बोर्ड के लिए ये तमाम ही बहुत अहम है। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है नंबर 1। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे कि अ सोप बबल लुक्स ब्लैक व्हेन इट बर्स्ट वाइट। मतलब जब साबुन का बुलबुला फटता है तो हाँ हमें ब्लैक क्यों नज़र आता है। तो देखिए बच्चे एक पॉइंट ये टॉपिक है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म का। दूसरे में जो मेन पॉइंट है वो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम जानते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्रस्ट ट्रप पे आता है, ट्रप क्रस्ट पे आता है और वहाँ पे हम लाइट को नहीं देख सकते, तो वो वहाँ पे हमें डार्क ब्रेन नज़र आएगा। तो देखिए बच्चे कि व्हेन द सोप बबल इज अबाउट टू ब्रेक, the thickness of the soap film becomes too small such that almost equal to 0. So the part difference between the two parts of the beam is 0, as one part of the beam is reflected from the denser medium. So therefore a part difference of lambda by 2 occur for ray 1, and the second ray is reflected from a rear medium, so there is no part difference for it. So now the total part difference between first and second ray become lambda by 2. So due to which destructive interference, क्योंकि बच्चे हम जानते हैं कि destructive interference का part difference होता है m lambda by 2, and as a result the bubble looks what बच्चे black। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए बच्चे कि what is the difference between interference and diffraction। Interference बच्चे is the superposition of two waves, और इंटरफेरेंस हम कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस इज़ द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग द सेम फेज, सेम फ्रिक्वेंसी एंड सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। लेकिन डिफ्रैक्शन में बच्चे क्या होती है, द बेंडिंग अप्लाइड फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल एंड स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स एंड मेक अ ज्योमेट्रिकल शेडो ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, दैट आर द डिफिनीशन ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखें ना, इंटरफेरेंस इज द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स और डिफ्रैक्शन इज द bending of waves around an obstacle। इसके बाद देखिए बच्चे द टू सेपरेट वेव फ्रंट originating from two coherent sources produce an interference, or secondary wavelet originating from the different part of the same wave front cause diffraction। Interference बच्चे the region of minimum intensity is perfectly dark in interference, or in diffraction they are not perfectly dark। For number, the width of the fringe is equal in interference, or in diffraction the width of the fringe is never equal। Fifth number point है कि the intensity of all position of maxima are of the same intensity in interference। In diffraction only zeroth order maxima has maxima intensity, while all other maxima are of the lower intensity than the zeroth order maxima। इसके बाद ये बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन अ Michelson interferometer a second glass plate is also used। Why? अब जनरल अगर हम कहें ना बच्चे टू इक्वलाइज द पार्ट डिफरेंस। अब देखिए ना हमें फिगर में दो मिरर दिए है M1 और M2। वहाँ पे एक हमारे पास है बच्चे बीम स्प्लिटर और ये दूसरा हमारे पास जो L2 मैंने P कहा है इसको हम कह सकते हैं कंपेंसेटिंग प्लेट, या ये भी हमारे पास एक ग्लास है।
अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे तो एक ग्लास प्लेट काफ़ी थी, ये दूसरा हमने क्यों रखा? तो इसकी वजह यही है कि अगर हम m को देखें तो ये 3, तो ये इसका जो पार्ट डिफरेंस है, इन दोनों पार्ट डिफरेंस में फ़र्क आता है. सो टू इक्वलाइज द पार्ट डिफरेंस we place another plate which is called what? Compensating plate. So देखिए बच्चे, between glass plate M and mirror M2, the wave travel twice through a second glass plate P. So the compensator, which is the same orientation, the same thickness, and is made of the same quality of glass as a used for the plate G, but without a metal coating. The compensator is the name suggests for the difference in optical path length between the two beams of the interferometer, because the beam reflected to mirror M passes 3 times to the optically denser medium of the glass plate M, where the beam transmitted to mirror M2 passes only once. So the compensator plate equalizes the optical path length of the two rays. White light has only a very limited coherence length. So when using a white light source, the optical path must be equal for all wavelength. इसके बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 कि how you can explain Brestwood law of polarization. देखिए बच्चे, ये लॉ हमने प्रूव की है टॉपिक में. जिस तरह यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, बिल्कुल टॉपिक में जो डिस्कस किया था पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, बिल्कुल वही क्वेश्चन है. उसी तरह इसको बच्चे याद करें. मैंने इसको टॉपिक में डिस्कस किया है, आप लोग इसका टॉपिक देख सकते हैं. इसके बाद है बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हाट इज़ मीन बाय द पाथ डिफरेंस विद द रेफरेंस टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव मोशन. देखिए बच्चे, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय टू वेव्स having the same initial and terminal point is the path difference. When two waves pass through a medium at a point, then the resultant displacement at that point is the vector sum of the displacement. So due to the component wave, this modification in displacement as a result of superposition of two waves is called interference. The path difference of two waves determine the type of interference. देखिए बच्चे, for constructive interference, the phase difference is pi, 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, which correspond respectively to the path difference d is equal to 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda is equal to m lambda, where m is equal to 0, 1, 2, 3. For destructive interference, the path difference is a pi, 3 pi, 5 pi, which correspond respectively. The path difference lambda by 2, 3 lambda by 2, and so on is equal to m plus half lambda. Question number 6 है कि why it is not possible to see the interference where light beam from the headlamp of a car overlap. देखिए बच्चे, you will not see interference pattern from the automobile headlight for two reasons. एक वजह ये है कि the headlight are not coherent source and are therefore incapable of producing sustained interference. दूसरी बच्ची बात ये है कि the headlight are so far apart in comparison to the wavelength emitted that even if they were made into coherent source, so the interference maxima and minima would be too closely spaced
to the obstacle, to the observer या to the observable. Question number 7 है कि a telephone pole cast a clear shadow in the light from a distant headlamp of a car, but not such effect as notified for the sound from the car horn. Why? देखिए भाई, sound and light both travel is a wave. So the properties of these wave differ quite considerably. Number first, sound wave travel a million times slower than light wave and have wavelength ranging from 1 centimeter to 10 millimeter and will easily diffracted round corner. So light waves have much smaller wavelength and only diffract through very small hole. Since diffraction depends upon the wavelength of wave and the wavelength of a light wave is very much shorter than the wavelength of sound wave. So light waves cannot diffract around the telephone pole, hence cause clear shadow, while sound waves diffract about the pole, therefore no such effect is observed. ये क्वेश्चन मुझे बार बार पेपरों में आ चुका है. इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट कि वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन द डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रे बाय यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. वजह यही है कि एक्स-रे की वेवलेंथ बहुत कम है और स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा है. सो रिमेंबर बच्चे, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन the diffraction X-ray by Young double-slit experiment because in principle diffraction effect are observed when the aperture of a slit is either or equal or less than the wavelength of the light used, such that d is very less than or equal lambda. So now the wavelength of light is of the order of 10 to the power minus 6 meter, while the wavelength of X-ray of the order of 10 to the power minus 10 meter. So thus in Thomas Young experiment, so small diameter slit of order 10 to the power minus 10 meter cannot be made. Therefore by Young double slit experiment, interference of light can be obtained while interference of X-ray is not possible. So the diffraction of X-ray can be obtained a crystal such as sodium chloride crystal where the atomic space are the order of 10 की पावर माइनस 10 मीटर. इसके बाद बच्चे ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैन वी अप्लाई हाइगन प्रिंसिपल टू अ रडार वेव. सो यस बच्चे, देखिए हाइगन प्रिंसिपल इज इक्वली एप्लीकेबल टू रडार मीन्स रेडियो ऑडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग वेव्स. देखिए बच्चे, अकॉर्डिंग टू Huygens principle, each point on the wave front of radio wave behave as a source for the secondary spherical wavelet, and this way the wave front propagate. It tells us that how wave front propagate in space from point to point. So radar waves are microwaves of wavelength 3 cm which are emitted and pick up after reflection from one aircraft or missile by a rotating aerial of a radar. The received signal are designed on a CRO. CRO का बच्चे मतलब होता है cathode rays oscilloscope with a calibration time based on the CRO. If the amplitude of the reflected signal received increases, it means that the aircraft or missile is coming. But if the amplitude of reflected signal received in a CRO decreases, it shows that object is moving away. Last question है बच्चे कि how would you justify that the light waves are transfer in nature. देखिए बच्चे, जब ये बहस की गई कि लाइट पार्टिकल है
कि लाइट वेव है, तो न्यूटन ने शो किया कि लाइट पार्टिकल है, फिर हाइगन्स ने कहा कि नहीं लाइट वेव्स है। तो ये तो हमें पता चला कि लाइट वेव या पार्टिकल है, लेकिन अगर लाइट वेव है तो ये वेव की कौन सी टाइप है, लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसफर। तो हमारे पास जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन एक ऐसी टेक्निक है बच्चे जो ये शो करता है कि लाइट नेचर में क्या है, ट्रांसवर्स है। सो देखिए द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन रिवील दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसफर इन नेचर। इट इज़ बिकॉज polarization effect occur only in case of transverse waves. So the longitudinal waves show no polarization effect. Therefore, experimentally prove that light waves are transfer in nature. और वो एक्सपेरिमेंट बच्चे आप लोगों ने बुक से निकली हैं। एक्सपेरिमेंट ये था कि इन्होंने एक लिया एनालाइज़र और दूसरा लिया पोलराइज़र। तो जब इन्होंने और एक वुड लिया, मतलब वुड फार्म में कार्डबोर्ड वुड फार्म लिया। अब अगर एनालाइज़र को हम पोलराइज़र के पैरेलल रखते हैं और इससे बच्चे गुजारते हैं, इससे हम गुजारते हैं, रस्सी में ट्रांसफ़र वेव गुजारते हैं, तो वहाँ पे उसमें कोई भी रुकावट नहीं आती, वो सीधे गुजर जाते हैं। लेकिन जब हम एनालाइज़र के अलावा पोलराइज़र रखते हैं परपेंडिकुलर, तो फिर वो उसमें जो रेज है वो ब्लॉक होते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि लाइट जो है वो नेचर में क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स है। और फिर इससे बच्चे बहुत सी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।